poem A Tragic Story from Literature book, page number 27. There lived a sag. Underline the word sag. It means a wise person. It means a wise person. In a days of a yore. Yore means a long, long ago. And he a handsome, pigtail over, but wondered much and sorrowed more, because it hung behind him. This is the story of a sag man, yore days, and he was handsome, and he wore a pigtail behind his back. It is a very wondered thing, sometimes a sorrowed also. What the sorrow? Because he hung a pigtail behind him. पुराने ज़माने में एक ऋषि रहते थे, वो बहुत ही होशियार थे, पर उनसे एक सुंदर पिगटेल पहनी थी, लेकिन बहुत सोचा, बहुत कोशिश की, फिर भी दुख हुआ, क्योंकि उनके पीछे ये जो टेल है, उसे पिगटेल बोला है, वो लटकी हुई थी, इसलिए वह बहुत ही दुखी था। ये नेचुरल टास्क है बेटा, ये नेचुरली है, इसे हम कोई भी चैलेंज नहीं कर सकते, उसको अलग भी नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पे जो वाइज मैन है उसने कोशिश अच्छी की, पर उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। He mused upon this curious case, and so he had changed the pigtail's place and have it hanging at his face, not dangling there behind him. One day he thought what he thought. This curious case happened with the wise man. He saw what he thought. One day he had changed the pigtail's place. He wanted to place this pigtail on his face, it not dangling there behind him. What he thought? उसने सोचा कि मैं ये शपथ खाता हूँ कि ये जो बेनी है इसका स्थान मैं बदल देता हूँ, और वह उसके मुंह पर लटकाना चाहता है, उसके पीछे लटकना नहीं चाहता, वो अपने मुंह के सामने उसे लटकाना चाहता है। We will turn to the next stanza number 3. Says he, the mystery, underline the word mystery, this means secret, I have found, I will turn me round. He turned him around, but still it hung behind him. This is the mystery for the wise man. When he turned his face, when he turned his head, after that the pigtail also turned around him. Then also, but still it hung behind the wise man. वो कहता है जब भी वो अपना फेस घुमाता है, फिर वो भी पिगटेल उसके साथ घूम जाती है, जो फिर गोल गोल करते अंदर बाहर करते करते वो पिगटेल उसके सर से हटती ही नहीं। इसकी वजह से जो वाइज मैन है वो बहुत ही यहाँ पे परेशान है। दिस इज द मिस्ट्री, ही सेड। ही फाउंड व्हाट ही फाउंड व्हेन ही टर्न हिज फेस, देन ही टर्न हिम अराउंड। जब भी वो फेस अपना टर्न करता है तो पिगटेल भी उसके साथ मूव हो जाती है। नाउ द stanza number 4. Then round and out and in all day the puzzle sag did spin in vain. It mattered not a spin. The pigtail hung behind him. Underline the word spin. Spin means will. In vain means unreal. When he turned round and round, in and out, all the day, this happened. When he turned his face, then pigtail also turned. That puzzle going all the day, round and round, in vain and spin. The pigtail hung behind him. पूरे दिन ये जो वाइज मैन है परेशान रहता था, जैसे ही मुंह घुमाता था, फेस राउंड करता था, ऊपर नीचे करता था, तो उसके साथ ये जो पिगटेल है वह भी पिन हो जाती थी, वह भी राउंड लगाती थी, फिर भी वह उसके पीछे ही लटकी है। ओके,
and right and left and round about and up and down and in out. दाएं बाएं चारों ओर, ऊपर नीचे अंदर बाहर, जैसे भी वो अपना फेस हिलाता था, मूव करता था, तो पिगटेल भी उसके साथ मूव हो राउंड एंड राउंड हो जाती थी. He turned, but still the pigtail stout. Stout means strong. Hung steadily behind him. Steadily means continuously. When the wise man turned his head, the pigtail stout, the pigtail on their place, hung steadily, continuously hung behind of the wise man. And though his effort never slack means weak. And though he twist and twirl and back, this is the phrase underlining, alas, still faithful to his back, the pigtail hung behind him. What happened here? The wise man makes the efforts to cut down, to remove the pigtail from his behind, but he always failed. The wise man always failed to remove it. Then also his effort never lacks, and though he twist, he twirl and tag, means turn around, alas, faithfully to his back, the pigtail hangs behind him. He never gave up. Who? The wise man. हालांकि जो वाइज मैन है उसने कोशिश यहाँ पे बहुत अच्छी कर रही है, कोशिश कर रहा है, पर भी वो अपनी जो होप है वो छोड़ नहीं रहा. वो मुड़ता है, लेफ्ट राइट घूमता है, अभी भी वो कोशिश कर रहा है और हमेशा कोशिश करता रहेगा कि वो पिगटेल से अपना पीछा छुड़ाए, पर फिर भी द पिगटेल हैंग्स बिहाइंड हिम. ओके.